वेलकम टू दी सेकेंड चैप्टर ऑफ द ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोन कटिंग एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से ऑस्टियोटोम, बोन चिजल, इनको हम लोग डिफरेंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द बोन कटर, ओके, एंड बोन कटर को हम लोग बोन निबलर के साथ में डिस्कस करेंगे। देन यू हैव द स्कूप, ओके, then there are something called as corticotome and periosteal elevator. There is something called as Gigli's saw that is more important in the forensic medicine and toxicology and not very important in case of orthopedics. Okay, so let us start with the osteotome and the bone chisel. जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको ऐसा जहाँ पर भी आपको ऐसा साइन मिलेगा दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ मस्ट नो इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ऑस्टियोटोम और द बोन चिजल, प्लीज रिमेंबर दोनों में से कोई भी होगा, ऑस्टियोटोम रहेगा या फिर बोन चिजल रहेगा। दीज बोथ आर ऑफ स्टिल टाइप। दीज आर ऑफ व्हाट टाइप? स्टिल टाइप। विच टाइप? स्टिल टाइप। ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर द ऑस्टियोटोम के कुछ पार्ट्स होते हैं। ओके, सो ऑस्टियोटोम के कुछ पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज द ब्लंट फ्लैट टॉप। Okay, so this is the blunt flat top. Okay, now next is the handle. This is the handle and the quadrangular shaft which is flattened on both the edge and both sides, and the edges are beveled. Okay, sloping edges, not very important. What is more important is for what purpose are you going to use it. So please remember that the osteotome is something which is going to get used for cutting of the bone and for making the osteoperiosteal flap. Okay, so for example this is my bone, one second, yeah, okay, it's थोड़ा सा artistic skills नहीं है, but anyways for cutting of the bone and for making the osteoperiosteal flap. Okay, समझ में आ गया? So this is the osteotome. Same blunt flat top, handle, quadrangular shaft, everything same for the stiller type of bone chisel. But for what purpose you are going to use it, please remember that you must understand ना, chronic osteomyelitis में कैविटी होती है, वो पूरी भर जाती है पस से, तो उसका सॉसराइजेशन करना। ओके, एंड देन फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड कैलस एट द नॉन यूनियन साइट। सपोज कहीं पे फ्रैक्चर हुआ था, वहाँ नॉन यूनियन हो रहा है, तो नॉन यूनियन में आपको क्या करना होता है? अनवांटेड कैलस को रिमूव करना होता है। ओके, सो फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड कैलस एट द नॉन यूनियन साइट्स, ओके, सॉसराइजेशन एंड कैलस रिमूवल के लिए हम लोग बोन चिजल को यूज करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बोन कटर? प्लीज रिमेंबर अगेन थ्री पार्ट्स। वन इज दिस नंबर वन इज द हैंड पीस विद द स्प्रिंग एक्शन। ठीक है, ये जो है ना, ये दिस आर द स्प्रिंग एक्शन। देन यू हैव हिंज and then you have sharp cutting edges. यही sharp cutting edges ना हो करके if you are having a cupped blade, see understand here, if you are having a cupped blade, और cupped blade में edges sharp रहेंगी सिर्फ, ठीक है, ये edges जो है वो sharp रहेंगी, बाकी blade जो है वो cupped blade रहेगा, तो that is a nibbler. Rest hand piece, spring action, hinge are same. So cutter, as the name suggests, cutting, so it is responsible for the bone cutting. And why you want to cut the bone? For making the bone grafts. ठीक है, तो एक बड़ा पीस आपने कट किया, सपोज बड़ा पीस कट करने के बाद में उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते हो। वाई? बोन ग्राफ्टिंग के लिए। तो ग्राफ्टिंग के लिए हमें छोटा पीस चाहिए, तो हम छोटे पीस में उसको कट करेंगे। दैट इज द फंक्शन ऑफ द बोन कटर। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन निबलर? नाउ प्लीज रिमेंबर द बोन निबलर इज यूज्ड फॉर, सी दिस इज अ निमोनिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग व्हिच आई हैव रिटन फॉर यू। ओके, निबलर। नाउ बी फॉर बाइटिंग, R for rough को smooth करना, and S is for smooth only. ठीक है, now biting means what? For biting excess of the bone. अगर सपोज कहीं पे बोन एक्सेस हो गई, ओवरग्रोथ हो गई, तो वहाँ पे बाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ निबलर, नंबर वन। एंड नेक्स्ट यू हैव फॉर द स्मूदनिंग द एंड्स ऑफ द बोन। बोन के एंड अगर रफ है तो उसको स्मूदन करने के लिए यूजिंग। एंड द थर्ड वन इज फॉर रिमूवल ऑफ द अनवांटेड फाइब्रस टिश्यू। तो अनवांटेड फाइब्रस टिश्यू होगा तो बोन कैसे होगी? रफ। तो अगर उसको रिमूव कर दोगे तो बोन कैसी हो जाएगी? स्मूथ। ओके, सो व्हाट आई हैव टू से इज फॉर द स्मूदनिंग ऑफ द एजेस, देन फॉर द बाइटिंग, कट उसके लिए बाइटिंग करते हैं एक्सेस बोन की, एंड देन फाइब्रस टिश्यू अगर ज़्यादा है तो वहाँ से हटाते हैं। देन देयर आर सम फेमस बोन निबलर्स। ठीक है, बोन निबलर्स क्या, मैं बोलता हूँ कि ये बोन निबलर का पूरा नाम होता है रोंग्योर। ठीक है, रोंग्योर बोन निबलर। ऐसे ऊपर दोनों स्टिलर टाइप के थे। ठीक है, chisel and osteotome, but nibbler is wrongier. Okay, now next is the scoop. Now scoop is something which is rarely asked, but if asked you should know the whole name, that is the Waxman type of scoop.
which type of scoop? Waxman type. Now what are the parts? You can see this is the handle, and this handle is what? This handle is rough. Okay, this handle is not rough, this is ribbed for what? For what purpose? For the good hold. Now what are the uses? So please remember, you know what is scrap? Scrap is immature, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है? रिसाइकल वगैरह करके स्क्रैप को क्या करते हो? फ्रेश कर देते हो. सो प्लीज रिमेंबर दिस थ्री वर्ड्स. स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग द वॉल्स ऑफ द कैविटी ऑफ द बेनाइन ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर होता है ना, तो ट्यूमर की जो कैविटी है, कैविटी को उसको स्क्रैप करने के लिए. एंड देन स्क्रैपिंग व्हाट? स्क्रैपिंग द ऑस्टियोमाइलिटिस कैविटी. Okay, scraping the osteomyelitis cavity and the walls of the cavity of the benign bone tumor. Next is to remove what? To immature callus. Immature callus को remove करने के लिए. And then freshening. Freshening of what? Freshening of the sinus tracts, fistulous tract, and freshening of the fracture ends. Fine. So scrap is scraping the wall of the cavities, number one. Then next is the osteomyelitis cavity. ठीक है, ट्यूमर की कैविटी, ऑस्टियोमाइलिटिस कैविटी, देन इमेच्योर कैलस, एंड देन फ्रेशनिंग ऑफ फिस्टुलस ट्रैक्ट एंड फ्रैक्चर एंड्स. ओके, फ्रेशनिंग ऑफ फिस्टुलस ट्रैक्ट एंड फ्रैक्चर एंड, देन इमेच्योर कैलस रिमूवल, एंड देन स्क्रैपिंग ऑफ व्हाट? बेनाइन ट्यूमर एंड ऑस्टियोमाइलिटिस कैविटी. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज द कॉर्टिकोटोम. ये कॉर्टिकोटोम है ना सर, ये एल शेपेड कटिंग एज होती है इसकी. क्या करते हो? सब पेरियोस्टियल ऑस्टियोटोमी. ठीक है, बोन में डालोगे तो ये पेरियोस्टियम को हटा देगा, एंड देन the rest part is used for the subperiosteal osteotomy. Okay, now next is the periosteal elevator. ठीक है, periosteal elevator full name is Farbaugh's periosteal elevator. See this is the Farbaugh's type of periosteal elevator. ठीक है, तो Farbaugh's type of periosteal elevator की you have three parts. One is the handle. Now this is the thumb rest. ठीक है, thumb rest के लिए हम इसको यूज करते हैं. And next part is the tip, sharp, curved and beveled tip. Okay, now why you want to raise the periosteum? Please remember, periosteum is a very thick structure, especially it is very much thick if it is a case of pediatric skeleton. Okay, तो thick structure है, tough structure है, जैसे ही कोई instrument लगाओगे it is going to slip. Number one. Number two, you have got so many vessels in the periosteum. So in order to get a safer plane, हम लोग क्या करते हैं? इसको पेरियोस्टियम के साथ साथ वेसल्स को भी वहां से हटा देते हैं. ठीक है, एंड देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिडक्शन ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर. ठीक है, रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है. ठीक है, फाइन. ओके, नाउ लास्ट वन वाज द एम्पुटेशन सॉ. आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कैन स्किप दैट. बोन सॉ और द गिगलीज एम्पुटेशन सॉ. Okay, so this was all about our topic of bone cutting and related instruments. One more short topic we'll discuss. This is actually a new chapter, but I want to discuss here only. There is the bone and plate holding instruments. Okay, so you have got one that is the reduction clamp, other that is the low man's clamp. Okay, so these are the reduction clamp. Full name is AO type of reduction clamp. Now what do you mean by AO? AO is Orthopedic Association or Association of Orthopedic. Okay, so AO clamp or forceps, what you are going to use is for holding the bone and the plate together. Okay, या फिर bone को भी पकड़ के रखना है for plate insertion, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. There are three types. One is the pointed one, then the serrated one, then the ball tip. Okay, now this is the low man's. Now low man's देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये स्क्रू है टाइटन करने के लिए. So this is the plate जो कि आप बोन के ऊपर रखोगे. ये low man के जो ये प्रॉन्ग्स दिख रहे हैं, इनके अंदर में फिट करोगे, नीचे से स्क्रू को टाइट करोगे और प्लेट और बोन ऐसे एक दूसरे के ऊपर जाकर के चिपक जाएगी. फिर आप यहाँ पर पे स्क्रूज डाल देंगे, तो दैट इज गोइंग टू कीप द होल्ड. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोन पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो फटाफट आप बोन पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो देख लें. थैंक यू.